Good day, everyone, and welcome back to Clara's Creation. Myself, Clara Rodriguez, lead kind light motto, star is assemble. Myself, Clara Rodriguez, the creator of Clara's Creation. Vocabulary. Today's unit is vocabulary based on a unit from 5th English, lesson Helen Keller. We've already understood the story of Helen Keller, and we know she was a physically challenged person, and we've looked at her work. Now, the Disabled Society has introduced some vocabulary based on which I am bringing out this video. Initially, for a person who was handicapped, a person who is handicapped means a person who is disabled means there is some problem with that person's organs, malfunctioning of an organ, or dislocation of an organ, or could be some deformity in the organ. To be more specific, the person has got a deformed organ, or the organ doesn't function at all, is what we understood. In other words, what we call Viklang or Apahij, disabled and handicapped. But now we cannot any longer call them disabled, we cannot call them handicapped. हम उन्हें विकलांग नहीं बोल सकते, अपाहिज नहीं बोल सकते. I'm physically challenged, I'm visually impaired. Got it? Are some of the terms that we use for people who are disabled. I am disabled, I am physically challenged, but not impaired. Just look at it, I use the word here, visually impaired. But now, to make life easy and comfortable, or maybe to make this society, or change the approach of the society towards them, we call it I'm physically challenged but not impaired. Meaning of impaired is weak and damaged. So, I'm no longer weak, I'm no longer damaged. I am disabled, I am physically challenged but not impaired. I am disabled, I am physically challenged, I am not burdened, I am not broken. What is burden? किसी पे बोझ होना. Broken, कोई टूटी हुई चीज़ जो पड़ी हुई है किसी कोने में. आई एम नॉट फ्रेजाइल, फ्रेजाइल आसानी से टूट जाना. आई एम नॉट इनविजिबल, इनविजिबल अदृश्य मीन्स समथिंग दैट इज नॉट विजिबल, जिसको आप देख के भी अनदेखा करो. गॉट इट? सो आई एम नॉट ब्रोकन, आई एम नॉट बर्डन, आई एम नॉट फ्रेजाइल, आई एम नॉट इनविजिबल. आई एम नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल. अरे ये हैंडीकैप है, इसको समझाना तो मुश्किल है, नामुमकिन है, ना के बराबर है, किसी के बराबर नहीं है. आई एम डिसेबल्ड, आई एम नॉट अ प्रॉब्लम. अरे ये तो हर प्रॉब्लम की वजह है, ये तो हर चीज़ की फसाद है, सारी फसाद इसी पे शुरू होती है, इसी पे ख़त्म होती है. आई एम नॉट लेस वर्दी, हम भी किसी से कम नहीं. आई एम नॉट लेस देन, मैं भी सामने वाले से कुछ कम नहीं. आई एम नॉट आस्किंग फॉर टू मच. आई एम डिसेबल्ड बट आई एम नॉट आस्किंग फॉर टू मच. मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ, वही मांग रही हूँ जो मेरा है. आई एम नॉट अ चेक बॉक्स. चेक बॉक्स आप बार बार आके देखते रहो, अरे वो देखो क्या कर रही है, अरे वो देखो आप क्या कर रही है. Then you go on putting on a checklist on the things. Checklist tick mark करते जाओ. Put a tick mark against the things that I have not done. Check box. I am not a side note. अरे इसका कौन सुनेगा, ये ले लो बाजू में रख दो. So, based on the chapter of Helen Keller, you need to be aware of the current things and the current scenario and go with the time. And here are some of the things that we have brought in to make things simpler
and make life easier for them without manipulating and through meaning of manifestation.